Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. This is Misbah Sajid and I welcome you all to my channel Talim for Everyone. In this video, we are going to start Approximation and Estimation Chapter 3 from New Syllabus Mathematics Book 1 or D1. So agenda of today's video is Section 3.1 Approximation. Then we will see the subtopic of this section, rounding. Then we will see what is rounding up and rounding down. Then we will cover work example 1 and work example 2 from this section. Okay, so let's start. So if you're using this book, New Syllabus Mathematics Book 1 or B1, so you may find this section 3.1 approximation on page 59 of this textbook. So let's start. So basically, what is approximation? So for knowing that, we have to go through one basic example of our real life. So when asked for the amount you take to get to school, would you reply with an exact figure such as or like 29 minutes and 11 seconds? For example, आपसे पूछा जाए कि जो है आप स्कूल आने में आपको कितना टाइम लगेगा या कितना वक्त लगेगा, सो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट बताओगे, टाइम बताओगे कि 29 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स? So most probably the answer is no, because in this case, the most common reply would be about 30 minutes. Sometimes you will say 20 minutes or 25 minutes sometime. But the most common reply would be, in this case, is about 30 minutes. In our daily life, there are many occasions like this. So what is this? ये basically है क्या? So basically, it means that in such cases, the occasion, we use an approximate value, not actual value. So what is approximation? So basically, approximation is something that is similar to the actual one, but not the same as something else. Means कि approximation का मतलब ये है कि आप उस वैल्यू के बिल्कुल करीब करीब हैं, बट एक्चुअल नहीं वो वैल्यू. So it means that we don't use actual value sometimes in some cases. So we use approximated value. For example, I will give one more example. Like if someone asks about your percentage. So, and if we get, for example, 89.5, then we usually say approx 90, राउंड ऑफ कर दिया, अप्रोक्सीमेट करके हमने बताया. I hope so यहाँ तक समझ में आया होगा what is approximation and why we use approximated value in our daily life. So here it's a subtopic of approximation is rounding. So in previous slide we have gone through that we often don't need to work with exact amount or exact number. So such an approximation is known as rounding. ठीक है, कभी कभी हम नंबर को आगे करके बता रहे होते हैं, कभी कभी पीछे करके बता रहे होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई बाय अ थिंग, एनीथिंग, if it cost 11 rupees, so I would say I have bought this in rupees 10. Okay, so because 11 से करीब करीब नंबर कौन सा है, 10 है. फाइन. या अगर मेरी परसेंटेज होती 89.1, so definitely I would say 89, not more than 89.1. ओके, सो ये चीज. तो कभी कभी हमने उस जो एक्चुअल जो नंबर होता है उससे ज्यादा या उससे कम बताना होता है. सो such process, such approximation is called as rounding. Look at the number line below. You see, this is the number line
and it basically shows multiples of 10, means कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 up to 90. ये सब 10 के टेबल में आते हैं. So if you see, if you notice that 18 is most closest to 20, and here 72 is most closest to 70. So therefore we can say that 18 is rounded up to 20 and 72 is rounded down to 70. So अगर 18 है, कोई भी हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं. तो इफ 18 है तो 18 को हम देखेंगे किससे मोस्ट क्लोजेस्ट है, तो 20 से, तो हम 20. 72, if here it is 72, so 72 is closest to 70, so we will say 70. The answer is 70. So therefore we can say that 18 is rounded up to 20 and 72 is rounded down to 70. Okay, so rounded up and rounded down का मतलब rounded up आप आगे जा रहे हो and rounded down आप पीछे की तरफ आ रहे हो. In the case of a number ending in 5 or greater than 5, for example 65, it is usual to round it up, so 65 is 70 to the nearest 10. Nearest 10 की बात की जाए, so इन केसेस में क्या होता है कि अगर आपका लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो बेसिकली कोई सा भी हो सकता है, नियरेस्ट 100 भी, नियरेस्ट 1000 भी. सो अगर नियरेस्ट 10 की अगर बात करें, और अगर इफ द लास्ट नंबर इज 5 और यू कैन से ग्रेटर देन 5, लास्ट नंबर मींस यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा आपका, इफ इट्स 5 और ग्रेटर देन 5, फॉर एग्जांपल हियर इट्स 65, so 65 usually it would be rounded up. So 65 rounded up to which number? 70 to the nearest 10. Rounding to the nearest 100 and 1000 is done in a similar manner. बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा rounding to the nearest 100 and 1000. Okay, so I hope so यहाँ तक आप लोगों का जो है concept clear हो रहा होगा. आगे चलते हैं. Here we have another example. अच्छा, ये basically it's not in your textbook. ये मैंने कहीं और से ली है, just to clear concept, कि आप लोगों का concept clear हो जाए. ये मैंने कहीं और से ली है. इन डिटेल में जो है राउंडिंग नहीं है, मैंने थोड़ा सा उसको और जो है ब्रीफली मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको. ठीक है, सिंपल हमारे पास एग्जाम्पल और साइड पे बताया हुआ है कि व्हाट इज राउंडेड अप एंड राउंडेड डाउन. सो जो है पहले मैं ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दूं, फिर उसके बाद एक्चुअल जो वर्क एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है उस पर मैं लेकर. नाउ हियर वी हैव question statement that round 729 and 483 to the nearest 100. But we have done in previous slide, we have just rounded two values to the nearest 10. Now here we have to round these two values to the nearest 100. Not necessary कि nearest 100 पे ही round हो, ये nearest 10 पे भी हो सकती है. ठीक है, so आगे चलते हैं. Look at the number line below. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 and 800. हमने पोजीशन स्पेसिफाई कर दी. Where is 483? Somehow it would be here 483 and 729. So it basically shows multiples of 100, multiples of 100. So notice that 483 is closest to 500. 483 almost closest to 500 and 729 is 700. So therefore we can say that 483 is rounded up to 500. Okay, and 729 is rounded down to 700. Okay. When you round to the nearest 100, the last two digit must be 0. अच्छा. According to this example, अगर आप जब भी nearest 100 पे rounding कर रहे होगे, either rounded up or rounded down, so last two digits जो होंगे unit और 10 पे, they must be 0. Okay, if you see over here 483 is closest to 500, so the answer is 500, and 729 is closest to 700, so the answer would be 700. We will not say 729. Okay, so according to this, when you round to the nearest 100, the last two digit must be 0.
सो आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। Now here it's proper work example of exercise um, 3A related to 3A, or you can say section 3.1 से related जो है work example 1 है. Okay. First we will solve this example just like we have done in previous two slides. Then we will do actual method. Okay, जो कि इस book में cover हुआ है. Now let's start. राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अभी जैसे कि मैंने बताया था नियरेस्ट 10 में भी हम कर सकते हैं इफ वी हैव 3 डिजिट्स। इफ वी हैव 3 डिजिट्स हम उसको नियरेस्ट 10 पे भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 100 पे भी कर सकते हैं। नियरेस्ट 100 वी हैव जस्ट डन इन प्रीवियस स्लाइड। नाउ वी आर गोइंग टू राउंड these two numbers which have 3 digits to the nearest 10. So here I have used a number line with a space of 1 digits. Okay, 270, 271, 272, 73, 74, 75, 76, 277, 278, 279, 280. Okay, 275, where it is, this pink arrow is showing that it's 275, 273.1, just nearest to 273, then 273.1. Here it is. Okay, if you see over here, 275, the last digit is 5. So 275 would be rounded up to 280, and 273.1. So 273.1 पॉइंट के बाद देखो 1 है, और इफ यू सी पॉइंट से पहले लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे 3 है, it's less than 5. So 273.1 is rounded down to 270. Okay. According to the above number line, 275 is nearest to 280 because the last digit is 5, and 273.1 is closest to 270. Therefore, we can say that 275 is rounded up to 280 and 273.1 is rounded down to 270. Okay. So I hope so you have understood what I have tried to show you all, explain you all. Okay, so now we are going to do this example according to the method which is given in new syllabus mathematics book 1. Okay, so let's start. So 275, we know that according to the nearest 10, 275 is equal to 280. Now how, if आपको जो है कोई भी नंबर हो उसको आपने नियरेस्ट 10 जो है राउंड करना हो, सो पहले आप देख लें कि कितने डिजिट्स हैं एक नंबर में। 3 डिजिट्स हैं, तो सो यूनिट 10 100। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन द डिजिट इन द 10th प्लेस। जो 10 पे है आपका डिजिट उसको आपने अंडरलाइन करना है। देन यू हैव टू सर्कल द नेक्स्ट डिजिट ऑन इट्स राइट। इफ इट इज 5, आपने यूनिट प्लेस को पे जो भी नंबर है डिजिट है उसको आपने जो है क्या करना है, सर्कल करना है। देन यू हैव टू सी इफ इट इज 5 और मोर, एड 1 टू द डिजिट इन द 10th प्लेस। अगर तो यूनिट प्लेस पे नंबर जो भी डिजिट है, इफ इट्स 5 और ग्रेटर देन 5, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू ऐड 1 इन 10th प्लेस, और जो सर्कल की भी वैल्यू होगी उसकी जगह आप सिंपल क्या करोगे, 0 ऐड कर दोगे। वो स्टेप 3 है। स्टेप 3, पुट अ 0 इन द वंस प्लेस इन द यूनिट प्लेस एज अ प्लेस होल्डर। सो 0 आ गया आपका यूनिट प्लेस पे। 10th में क्या हुआ, बिकॉज यूनिट प्लेस पे जो आपका डिजिट था 5, इट्स 5। ओके, सो आपने क्या किया, 10th प्लेस पे जो भी डिजिट था उसमें 1 ऐड किया। सो 7 + 1 is 8, 280 टू द नियरेस्ट 10। ओके, अगर नियरेस्ट 100 कहा जाता, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना होता, जो 100 पे आपकी वैल्यू है, डिजिट है, उसको आपने अंडरलाइन करना होता। 10 पे जो डिजिट है आपका उसको सर्कल करना होता। ओके, और जो यूनिट पे है वो ऑटोमेटिकली जो है 0 हो ही जाता। ठीक है, क्योंकि वी हैव जस्ट स्टडीड इन प्रीवियस स्लाइड के जो है नियरेस्ट 100 पे आपको जो राउंडिंग करनी होती है उसमें लास्ट 2 नंबर्स जो हैं इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अगर नियरेस्ट 100 की बात की जाए, सो 275 इज राउंडेड
up to 300 to the nearest 100. ओके, सो ये चीज भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दी थी. आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट इज 273.1 to the nearest 10. So first step, आपने अच्छा डेसिमल प्लेस में हो और राउंड करना हो नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000, what you have to do, you have to just ignore all decimal and the value after decimal. Okay, so उनकी कोई नीड नहीं है. ओके, प्रोसेस वही सेम होगा. कैसा होगा कि फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरलाइन द डिजिट इन द डैश प्लेस 10 प्लेस. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ unit 10 100. Okay, when you are going to round up all decimal numbers, so just ignore all decimal and digits after decimals. Okay, so just work on the values before decimal. Okay, so unit 10 100. So first step is to underline the digit that is that is in 10th place. तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ. यहाँ पे एमसीक्यूज की या ब्लेंड्स की तौर पे दिया हुआ भी है 10th प्लेस. नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज टू सर्कल अ डिजिट दैट इज इन unit place or ones place. Okay, if it is less than 5, the digit in the dash place remains the same. The digit in the tens place remains the same. Okay, if the circle digit, if the circle digit is 5 or greater than 5, then we will add 1 to the tens place. Or if the circle digit is less than 5, then we will not add any number or we will do nothing. It would remain same. Because we are doing rounding to the nearest 10, तो हमने यहाँ पे जो भी काम करना है यूनिट को देखते हुए 10 के ऊपर काम करना है. ठीक है, if the circle digit in tens place is smaller than 5 or less than 5, then we will do nothing with the digit in tens place. It would remain same. Okay, now step 3 क्या होगा? Put a dash in the dash place. Put a 0 in the ones place, or you can say unit place as a placeholder. Omit all the digits after the decimal point. So it means that the answer would be 270. I have told you this with the help of number line that 273.1 is rounded down to 270 to the nearest 10. Okay, so I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any query, so you may comment your query anytime. I will try to respond them okay as soon as possible. So now let's begin with work example 2. If you are using this textbook, so you may find this example, work example 1 on page 60 and work example 2 on page 61 of New Syllabus Mathematics book 1 or D1. So what you have to do in example 2, read out the statement. Rounding up correct 96.482 to 1 decimal place, the nearest whole number. Okay, now 96.482 to 1 decimal place. अभी तक था nearest 10 या nearest 100 या nearest 1000. Nearest 1000 तो नहीं किया. We will do it inshallah in exercises questions. Okay, यहाँ पे decimal place की बात. What about decimal place? Decimal place के बाद you have to work on the digits after decimal point. Okay. Okay. All right. So अब ये है कि हम लोग अगर पॉइंट से पहले देखते हैं तो क्या होता है. द लास्ट मोस्ट डिजिट इज यूनिट, फिर दैन हम लेफ्ट पे चले जाते हैं 10, फिर 100, 1000, 10,000 इस तरीके से. उसके बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स हो देन हाउ वी विल बी रीड दैट. लाइक फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस,
पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है दैट इज नोन एज फर्स्ट डेसिमल प्लेस, और यू कैन से 10th प्लेस. ओके. सेकंड डेसिमल प्लेस दैट इज 100th प्लेस. फिर थर्ड डेसिमल प्लेस दैट इज 1000th प्लेस. ओके, लाइक दिस we will call. Okay, so here it is 96.482, 96.482 to a फर्स्ट डेसिमल प्लेस. वन डेसिमल प्लेस तक आपने जो है आंसर लाना है. इट मीन्स दैट पॉइंट के बाद यू विल हैव ओनली वन डिजिट. ओके, सो हम पॉइंट से पहले की वैल्यू को तो टच नहीं करेंगे. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन ऑल डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. और कौन सी डिजिट्स पे आपने वर्क करना है यू हैव टू सी. ओके, सो here you have to correct this value to one decimal place. It means that step वन क्या होगा, one decimal place पे लानी है. तो जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी दैट वुड बी अंडरलाइन. ओके, अंडरलाइन द डिजिट इन द 10th प्लेस. ओके, स्टेप टू, सर्कल द नेक्स्ट डिजिट ऑन इट्स राइट. जो उसके मोस्ट राइट पे वैल्यू होगी, ओके, उसको आपने अंडरलाइन करना है. Okay, if it is 5 or more than 5, then add 1 to the digit in the 10th place, or you can say to the digit that is underlined. Okay, so this circle value is greater than 5. Okay, so it means that you will add 1 and ignore rest of the value. हम वैसे क्या करते हैं कि जो जो है सर्कल वाली वैल्यू है, इफ इट्स ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह जीरो प्लेस कर देते हैं और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उनकी जगह भी जीरो कर देते हैं. बट जब आप डेसिमल पे वर्किंग कर रहे होगे ना, तो क्या होता है वो सारी वैल्यूज इग्नोर हो जाती है. ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि 273.1, तो हमने डेसिमल के बाद सारी वैल्यू जो है इग्नोर कर दी थी राउंडेड डाउन में. अब यहाँ पे राउंडेड अप है, और यू कैन से नॉट एग्जैक्टली राउंडेड अप, इट्स वी हैव टू करेक्ट दिस वैल्यू टू वन डेसिमल प्लेस. तो जितना हमें आंसर चाहिए उतना हम आंसर कॉपी करेंगे, उतने डेसिमल पॉइंट तक हम कॉपी करेंगे आंसर. आंसर लेकर आएंगे अपना. उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज होंगी दैट विल बी ओमिटेड, और यू कैन से वी विल इग्नोर. ओके, सो ये सब इग्नोर कर देंगे. सो 4 + 1 = 5. तो पॉइंट के बाद क्या आ गया वन डेसिमल प्लेस पे 5. सो 96.5. 4 + 1 = 5. So 96.5. So do not add any zero after the first decimal point. Okay. So 96.4 we have corrected to one decimal place is 96.5. Okay. Now to the nearest whole number. To the nearest whole number. So again, but we have to check अगर हमने whole number में convert करना है. ठीक है. If we have to convert any decimal number into whole number, then जो point से पहले आपका जो यूनिट वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको आपने अंडरलाइन करना है. ओके, लाइक दिस. फर्स्ट स्टेप इज अंडरलाइन द डिजिट इन द वंस प्लेस. देन स्टेप 2 इज सर्कल द नेक्स्ट डिजिट ऑन इट्स राइट, और यू कैन सी दैट पॉइंट के बाद जो आपका फर्स्ट नंबर है 10th प्लेस पे उसको आपने जो है सर्कल करना है. एंड यू हैव टू चेक if it is less than 5, the digit in the dash place, the digit in the ones place or unit place remains the same, and we will not add any zero after the ones. Okay, so it means that whole number में convert कर रहे हैं तो definitely जो है decimal इनकी inclusion होगी नहीं. So 96.482 पॉइंट जो पॉइंट से पहले जो डिजिट है दैट विल बी अंडरलाइंड, एंड पॉइंट के बाद जो वैल्यू द फर्स्ट मोस्ट जो वैल्यू है दैट विल बी अंडरलाइंड. इफ इट इज लेस देन 5, then we will not do anything with the underlined value, or if it is it would be 5 or greater than 5, so then we will add 1 to the underlined value. So at 96.482, this circle value is less than 5. So it means that we will not do anything with the value
that is underlined. So 96.482 is equal to 96 to the nearest whole. Okay, जैसे कि 273.1 is rounded down to 270. Okay, similarly, 296.482 is rounded down to 96. यहाँ पे हमें यही नहीं बताया कि नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 जो है हमने होल नंबर में बताना है. जस्ट सिंपली हमें ये कहा गया है यू हैव टू करेक्ट दिस वैल्यू or you have to convert this value to the nearest whole number. So 96.482 is nearest to 96. अगर यहाँ पे भी हमें if in example 1 हमें यहाँ पे नहीं कहा जाता कि 273.1 को आपने कितना डेसिमल जो है करेक्ट करना है, ठीक है. अगर नहीं बताया जाता कि नियरेस्ट 10 है या नियरेस्ट 100 है, तो जो है हम डेफिनेटली यही करते. 273.1 इज नियरेस्ट टू 273, तो हम 273 ही लिखते. ओके, सो बट ऐसा नहीं था. वहां पे नियरेस्ट 10 बताया हुआ था, आई गेस. यस, नियरेस्ट 10 बताया हुआ था. सो 273.1 इज इक्वल टू 270 टू द नियरेस्ट 10. So like this. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any queries, so you may try to ask in comment section. I will try to respond them as soon as possible. So in next video we will try to I will try to start exercise 3A. Okay, and it's few question I will discuss in next video in few questions of related to exercise 3A. ओके, यहाँ तक एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन, राउंडिंग, राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन आप लोगों को जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल तालीम फॉर एवरीवन एंड हिट लाइक बटन एंड प्रेस बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहे. And don't forget to share my channel with your family and friends. Okay, thank you once again. Allah Hafiz.